regarding this part? ACS analysis. That's clear? All I have done this examples. All I have done these examples or not? For six example, because one of them share the values, not other of them. Everyone do that? Yeah, got. Okay. Okay. Here we talk about as the yesterday classes RCS, ACS, absolute coordination, and the second one is yours RCS, relative coordination, right? And how to use them. We can also talk about this part, right? Okay. Then third one is left. Let's talk about this part, right? Is your polar coordinate system. Okay. Polars in this case, polar denote as your angle. Okay. For angular value, we denote as a polar, right? Bipolar, its sense is angular. Okay, where we use the angle part, right? How can we use this? Show the object by use of the angles. Okay. Then this is called your polar coordinate system, right? How can we do this? Just here. Okay. So then what you do? At the rate, you write here is your distance first. What distance is that? And then your angle. And then what you do? Here we use the less than sign. Okay, at the rate, you write here and the distance, and then after this, write here is your angle. Okay, this by way this way you can calculate your divide. Okay. How can we do that? For this part, you use suppose here we use this way. I create this one. Okay. Yeah, this is your one. Okay. And this is path. Okay, suppose here which here we have to write the value is your at type here, and then 0 comma 0 degree, right? This is your first value. This is your second value, right? Here you want to click add direct, and here we have the square value is 100, distance is 100, and then the angle is 0, right? This angle is 0, right? Angle is always remember as the anti-clockwise, right? So we got the value is the anti-clockwise direction, right? And then what about this value? The what's this degree right here? When here this is distance between is 50, then what you do? Just write here is at is your 50, and then what you do? Just write here is a 90 degree. Here we have that angle is a 90 degree. After this, I want to create this thing, and then use add the symbol here, and then if this distance is 100, don't need to write here is a minus plus anything. Okay, just write here is your 100 distance, and then right here is the angle is 180 degree. Right, this is your angle value. Just you can specify here, right? Okay. खुशी यू हैव खुशी आपको कोई डाउट है कल की क्लास में? कल जो आपने ये देखा था, आपने सारे एग्जांपल्स कर लिए? खुशी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, मोहित आपसे तो फिर भी पूछा मैं। ओके, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो हम आगे चलते हैं। तो ये वी हैव दिस वैल्यू। ओके, तो आपके पास इस तरह से वैल्यूज आएगा 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड देन दिस डिग्री। ओके, तो बस आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। What you find out is angle and distance. Though two things we need is angle and distance only. Right? We only need two things, angle and distance. Right?
After that, you can create these values. ओके, समझ में? तो चलो हम इसे ही बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? चलो हम एक बना के देखते हैं. जस्ट create this part in your AutoCAD. First of all, what you do, I copy this part right here and then paste here. First of all, I enter line and then what we do, first select the first point. Okay, select my first point. Select first point anywhere. ठीक है, आपको कहीं पे भी सिलेक्ट कर देना फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट से आपको डिस्टेंस में मायने रखती है, तो 100 डिस्टेंस है, राइट? एंड देन एंगल इज योर 0 डिग्री. After this, distance is your 50, and then angle is your 90 degree. Okay. And after this, distance is your 100, and then angle is your 180 degree. Okay. And then किसी एंटर करके आप इसको क्लोज कर सकते हो, बना सकते हो. ओके. तो चलो हम बनाते हैं. तो कम टू दिस पार्ट. And first of all, I set the limit first. Okay. Limit steps, and then zoom all. Okay. This is my limit, right? And then come to just the next part is your. I want to make this rectangle. So what you do, just Al enter. First of all, right here is the Al enter, and then click off anywhere. Okay, I click in this spot, and then I want to click. Here is the 100 of distance of the value, right? So what you do, just right here is the at the rate first. Okay, one thing is you have I close all the thing because I on this thing. I don't need to. This part is here. Okay, this will be talk at the Monday. Okay. I'll enter. First point, you click on anywhere. Okay. After that, you write here is at the 100 and then angle is 0. Okay. It says and then will be mad, right? And after that, I want to create this way. Then how can we do this? Just at the rate, right here is the distance is 50 and then angle is 0, 90 degree, right? And then next value is 0 at the 100. No, don't need to apply here. Is your minus value is 180 degree, right? Then C enter. Okay, then this is where this values will be formed. Just clear? Okay, this will be simple. Okay, by use of the polar coordinate system, I want to make this any of the things. Suppose I want to create this E value. Okay, this E, and how can we do this E for this time right here? So just check this one. I use it and then show the E right here. I want to make this E. Okay. Then you want or you tell me how is this values right here. Okay, suppose here I want to create L enter. Okay. And then here I use the polar coordinates, not any other coordinates. Then L enter first, and then first point value specify. Next point value is it is. Anyone tell me what's the next point value? कोई बता सकता है next point की value क्या होगी? Anyone tell me next point value? हम्म, कोई बता सकता है नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू? यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वैल्यूज कैसे लेंगी, राइट और नॉट? हम्म, कोई बता सकता है? वही तो बताओ. एनीवन टेल मी नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू. सबको आवाज आ रही है ना मेरी? मैसेज से बता दो, कोई दिक्कत नहीं. 140 एंड 90. 140 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे 75 मुझे दिख रहा है. 140 तुमसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा. आप लोगों को स्क्रीन तो विजिबल है परफेक्टली? यस क्या?
ओके, अगर आपको तो आप मैसेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, मगर आप क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, लेफ्ट वन, कहाँ से लेफ्ट हो गया? ओके, here we have the 75, right? So right here is the at the rate 75, and the angle is your 0 degree, because here I start the angle by use of the anti-clockwise direction, and then here this is my 0 degree angle, right? And then this is right here is a zero. Okay, this one I made. After that, I want to create the straight line. Okay, then at the rate I use 15, and then after that 90 degree. Okay, and next value is yours. Please tell me next values. At the rate 60, and angle is, what's the angle here? 180, right or not? Yes या नो, समझ में आ गया आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज करना है? Okay. Again, right here is the at the rate. I create the first one is 45, and then angle is your 90. Okay. And then here we create this value by in the direction of the 60. Then what you do, right here is 60, and then this direction is your 0 degree, right? And after that, I want to create the straight line here for 15 distance, and then right here is a 15, and then angle is your 90 degree. Okay. And then again, you write here the backward direction. Here is the angle is your 180, and then distance is your 60. Right here is a 180 degree. Okay. And after that, we create you a straight line. Then what you do, the side here is 45, and then angle is your 90 degree. Okay. And then again, you use the at the rate 45 is value is your 60, and then angle is your 0. Okay. And then after that, what you do, just at the rate you use it, and then right here is your 50, and then angle is your 90. Okay. And then after that, you can write is at the rate, and then next value is 75, and then angle is your 180, right? And then after the C, and then we can close this value, and then got this type of values, right? Okay. Yeah, why we use angle values? Okay. Suppose we don't in every time we don't need to make the things in form of straight lines. Okay. Sometimes we want to create the value in form of this way, where we have to tilt the line in form of 45 degrees, 60 degree, 90 degree, any of these right here. Then how can we make this thing? By use of this way. That's why we can use the polar coordinates. Okay. This second piece is mostly used of the by use of the polar coordinate system, not related by use of the polar coordinate system, right? Okay. Then just use it. How can you use this thing? Just right here, come to this part. Suppose here I want to make this V, this thing is you have this square is tilted with 45 degree right here, and then this is 100, 100, and 100, right? Okay, you know about the first line angle. This angle is your 45, right? Okay. First of all, we'll calculate this angle. Okay, here I can create this. First of all, is L enter, and then click on the any point right here, and then here write the at the rate. This one is your 50, and then angle is your 45. Okay. And after that, I want to create this line in this part. Then what's the angle is here? Anyone tell me what's the angle is here? कोई बता सकते हैं इसका एंगल क्या होगा? यहाँ पर मैं एंगल क्या दूँ इसको? डिस्टेंस तो मेरे पास 50 है, एंड देन एंगल क्या दे सकता हूँ मैं इस केस के अंदर? किसी को आइडिया? यहाँ पे तुमने 45 दे दिया, इसने मुझे 45 डायरेक्शन में बना दिया, देन इसी के अपोजिट मुझे बनाना है। देन यहाँ पे 45 दे के तो मैं नहीं बना सकता। अगर मैं 45 दूंगा तो वापस से मुझे इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट? ये रॉन्ग, यस या नो? तो इस केस में मैं एंगल क्या दूंगा? कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन कैन टेल मी? 135, राइट? ओके। तो इस केस में आपके पास एंगल क्या होगा? 135। तो आपको करना कुछ नहीं, ठीक है? तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे आना, एट द रेट लिखना, एट द रेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 135, राइट? एंड आफ्टर दैट इस केस में मेरे पास एंगल क्या होगा?
मैंने 50 लिखा है, इस केस में मैं एंगल क्या लूंगा? क्या हो सकता है एंगल? ये मेरे पास यहाँ तक कितने होंगे? 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, आफ्टर दैट प्लस 45, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस? इज 225, राइट? ओके, एंड देन आफ्टर द सी एंड देन आप क्या कर सकते हो? इस तरह की चीजें क्रिएट कर सकते हो, राइट? आराम, समझ में आया? यस या नो? यस सर। ओके। अगर मुझे ये ट्रायंगल बनाना है जिसकी डिस्टेंस आप देख सकते हो 60 डिग्री है इनके बीच में, ओके? इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री 60 डिग्री, राइट? अगर मुझे ये ट्रायंगल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? एनी आइडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एल एंटर किया, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट तो मैंने दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे अच्छे से पता है, एट द रेट 100 दूंगा एंड देन 0 डिग्री एज एस राइट एज 0 डिग्री, एंड देन आफ्टर दैट हाउ कैन वी क्रिएट दिस लाइन? ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल तो नहीं दे सकता मैं, ये एंगल जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट? ऐसे ही होगा ना? मैं एंगल जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे है ना? मैं एंगल स्टार्ट विद दिस लाइन, ओके, दिस पोर्शन, ओके, बाय दिस पोर्शन, तो इसका एंगल क्या होगा? यहाँ से मैं स्टार्ट करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसका एंगल क्या हो सकता है, बता सकते हो? तभी तो मैं यहाँ बनेगा, क्या होगा? डिस्टेंस तो हमें वन पता है ना? ट्वेंटी यस, 120। 120, राइट? तो क्या होगा? 120, ठीक है, 180 में से 60 माइनस कर दो, 120 आ जाएगा, ठीक है? ओके। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ का एंगल निकालना चाहूँ तो इसका एंगल क्या होगा? कोई बता सकता है? डिस्टेंस 100 है एंड देन इसका एंगल क्या हो सकता है? क्योंकि इन दो के बीच की लाइन की डिस्टेंस क्या है हमारे पास अभी भी, क्या है? 60 है इन दोनों के बीच में, तो इसका एंगल क्या होगा? क्योंकि ये एंगल तो यहाँ से काउंट होगा, राइट? ओके, तो इसका एंगल क्या हो सकता है? व्हाट्स द एंगल ऑफ दिस पॉइंट? मैं सी एंटर नहीं कर रहा, मैं सीधा एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, कोई बता सकता है एंगल क्या होगा इसका? एनीवन? नो वन कैन टेल me? Vijay, can you write that in for chat because your voice is 120। not clear? Okay, write in your chat, okay? Because this right is not clear, voice is not clear. इस लाइट आप चैट के अंदर भी राइट करके बता सकते हो मुझे एंगल क्या हो सकता है, ओके? प्लीज एनीवन जस्ट शो मी द एंगल ऑफ दिस पॉट। मेरे पास डिस्टेंस है, एंगल मुझे नहीं पता। ओके, कैन एनीवन टेल मी? नो वन? ओके, देन आई टेल यू, दिस इज योर 240, and then how can we calculate the 240? How can we find out the this angle is your 240? This is your 240, right? And then after we add the rate 240 right here, then we got the value. Got it or not? Yes or no?
Then come to the next parts here. We, if you want to create, if you have the many of them, okay, you can create this thing by yourself, okay. And then one thing I create your by myself for this diagram, okay, because in this diagram many of have confused, okay. So how can we take this value right here? Okay, first of all, I want to calculate this angle. How can we calculate this angle? First angle will be given is 60 degree, and then what's the angle of next point? What's the angle of next point? Anyone tell me? What's the angle? Okay. What's the angle of this point? Can anyone tell me? After the equate, by use of this angle, was you specify, and then after that you calculate this angle also. What's the angle of this? And then after that you calculate this angle also. And okay, can anyone calculate this angle? यहाँ पे जो angles आ रहे हैं उसको कोई calculate करके बता सकता है? Anyone? कोई तो बताओ. ऐसा कैसे चलेगा? हम्म. इधर एंगल क्या होगा? कोई तो बोलो. 30 डिग्री. यस या नो? यहाँ पे इसकी एंगल 30 डिग्री होगी या नॉट? नो वन टेल मी. और इसकी एंगल क्या होगी? वन 150. और इसका एंगल क्या होगा? 120. राइट और नॉट? और इसका एंगल क्या होगा? 240. और इसका एंगल क्या होगा? 210. यस या नो? और इसका एंगल क्या होगा? 330. एंड इसका एंगल क्या हो सकता है? 300. ऐसा ही कुछ होगा या नो? बताओ कुछ. मैंने तो बना के दिखा दी. यही है या गलत बताया? गलत लिखा हुआ है, मैंने गलत लिखा है. ऐसे या नो? हम्म. तो सही है या गलत है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल्स? यस या नो? ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको. ओके. लिख लिया एंगल्स. लिख लिया.
ठीक है। चलो हम इसी एंगल को फॉलो करते हुए बनाते हैं इसी चीज को। राइट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एल एंटर। फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, distance is your 50 and then angle is your zero, क्या था, is your 60 डिग्री, राइट। तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री, राइट। ओके। The next one is your also at the 50 and angle is your, मैंने जो निकाला क्या निकाला, 30। okay, next one is your at the 50 and angle is your 150। okay, and after that at the 50 and angle मैंने क्या निकाला, 120। ओके, तो एंटर किया, ये बन गया। आफ्टर दैट at the 50 and angle is your 240, right? And then after that at the 50 and angle is your 210। okay, and after that at the 50 and angle is your 330। okay, and then after that at the 50 and angle is your 360 नहीं, 300 हो। okay, by we use again we enter head enter and then goes after the value। okay, आप इस तरह से भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट बाय यूज ऑफ 180 डिग्री, नॉट यूज ऑफ द वर्स 360। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने एल एंटर किया, राइट हियर। ओके, फर्स्ट वैल्यू आप तो 180 डिग्री के अकॉर्डिंग ही चलोगे। एट द रेट आपने दिया 50 एंड देन हियर राइट हियर इज 60। ओके, देन हियर एट द रेट 50 and then right here is your 30 degree। okay, and then after that at the rate 50 and right here is your, what's the value is next is 150, right? okay, and then at the rate 50 and right here is your 120। okay, and then click on it। एंड मुझे बस इसके बाद इसके रिवर्स पे जाना। ओके, अब 180 के अकॉर्डिंग ही मैं लेके चलूंगा, तो 180 एंड देन आफ्टर द राइट इज माइनस 120। ओके, बस इसी वैल्यू को माइनस में ले चलो एंगल की। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो माइनस, अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो। ओके, 360 के अलाउ तो आप 180 के अलाउ भी जा सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज द 180 अलाउ। ओके, एंड देन व्हाट्स यूज द लास्ट हियर is -30। okay, yeah, and then after that you use the Android 50 and then use here is -60, right? And then we can create this value again। clear, समझ में? तो आप इस तरह से एंगल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करके आप यहाँ पे चीजों को ड्रॉ करोगे। एंड देन when we have to tilt the object in your in any direction, then we can use this part, right? Or not? That's clear or not? ओके, तो आप यहाँ तक फर्स्ट पेज तो आपको करना ही फॉलो कोऑर्डिनेट सिस्टम से, राइट। एंड देन ऑल्सो डू द सेकंड पेज ऑल्सो। ओके, एंड देन कल संडे तो आराम से करो। ओके, ठीक है, तो आराम से ये सारी चीज एग्जांपल्स करना आप। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ओके, एंड देन ऑल्सो सेंड टू मी। ओके, क्योंकि सिर्फ एक ही ने मुझे सेंड किया। ओके, देवीस नाम देवीस ने ही सेंड किया, बाकी किसी ने भी मुझे सेंड नहीं किया। नन ऑफ अदर्स देन सेंड मी। ओके, तो मुझे सेंड करो क्या बनाया क्या नहीं बनाया, एंड देन वैल्यूज के साथ, राइट। एंड देन मैंने ग्रुप में डाल ही दिया, सभी के पास पहुंच गया होगा, राइट। ओके, तो ये चीजें आप बनाओगे, क्रिएट करोगे बाय यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से। जैसे नो, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? ओके, गेस गुड। ठीक है। लगता है बहुत लोगों के नेट इशू चल रही है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज हियर। मैं यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस बता देता हूँ। ओके, तो कुछ और ऑप्शंस यहाँ से। ओके, तो आपकी एंगल जो होगी वो उनकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, ये भी लिख लेना। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन इज जो मैं जो आपको बताता हूँ, सिलेक्शंस। ओके, सिलेक्शंस, सिलेक्शन ऑफ द विंडो, सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में दो तरीके होता है। फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट सिलेक्शन, आप डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन इन द सेंस आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो एंड देन वो सिलेक्ट हो जाए। डायरेक्ट सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। सेकेंड वन इज योर ब्लू विंडो सिलेक्शन, विंडो वे सिलेक्शन। एंड थर्ड वन इज योर ग्रीन विंडो वे सिलेक्शन। ओके, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब डायरेक्ट सिलेक्शन में इन द सेंस आपकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सिलेक्शन पे, जैसे कि मुझे ये करना है क्योंकि ये सभी एक एक लाइन है, तो मैं यहाँ पे लाइंस पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पे गया और जस्ट क्लिक ऑन द लाइन। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट थे उस पर मैंने क्या किया, जस्ट क्लिक किया, तो एक एक करके मुझे क्लिक करना पड़ता, राइट। ओके, आप चाहो तो इसकी मदद से आप इसे अलग थलग भी कर सकते हो। ओके, तो मुझे एक साथ क्लिक करने बार बार क्लिक करना पड़ेगा, एक एक करके मुझे सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट बाय वन। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन से व्हाट यू डू, सिलेक्ट वन बाय वन ऑब्जेक्ट. But want to select by one way. So how can we select the one way? We have the two things. One click as right to left to right, and the next one is left to right to left. Okay. Here what we have the in blue window. What you do? Just use the left to right. Go to left to right direction, and then here right to left. Okay. If you click the mouse button, okay, right click on the left click on the mouse button, and after that you goes to the next one. Your blue window will be appear, and then click on it. Okay, not click, not hold this click. But if you hold this click, then what will be happen? This will be done. Okay, and this will be not wait, correct wait for the selection. Okay, this is your blue window, and then this is your green window. If you goes to the left to right, then this is green window. If you goes to the left to right, this is blue window, and right to left, this is goes to the green window. Yeah. And then how can we select this part? Just click on this left window first. Yes. A little bit. Just click on the left window is yours. Then what will be happen? No object will be selected. Why no object will be selected? Because in the blue window, you have to select whole object area. Okay. If you cover all object area, then object will be selected. Okay. Suppose here, if you want to cover this part only and then want to select this part only, then what will be happen? This will be not selected. Only these two lines will be selected. Okay, because these two lines cover inside the blue window. Okay. And then for green window, just use to select only minor sides of the any object, then whole object will be selected, right? If you select only this line by this way, I select only this part, okay? And after that, my this line will be selected. Okay, if you use this by blue window, the object will be not selected. If the object part is not covered in this window, if object part is covered in this window, then this part will be selected. Okay. And then if you want to use the blue green window, then object and small parts of the object will be covered here. Then this part will be selected. Okay. By use of this way, you can select the object. मैं object को select कर सकता हूँ and then enter for erase and erase this object. Okay. And then also you can want to move, enter for move, and then click on any points and then move on it. Okay. Then selection is important, right? Yes या no? ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आप ये चीजें आप इंपॉर्टेंट तरीके से करोगे। क्लियर, समझ में आया सिलेक्शन कैसे करना है हमें इसके अंदर ऑटोकेड के अंदर ऑब्जेक्ट को। मैंने दोनों तीन ऑप्शंस बता दिए किस किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो, राइट और नॉट, यस या नो, समझ में आया सिलेक्शन करना। अब दूसरी चीज मैं यस बता सर। देता हूँ, जैसे कि मैंने एल एंटर किया, राइट। ठीक, एल एंटर करके मैंने लाइन बनाया, लाइन बनाने के बाद मैंने लाइन गलत बना दिया। होता है मेरे पास कभी गलत बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक अंडू का ऑप्शन होता है, यू एंटर करके अंडू भी कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल जेड। अंडू के लिए आप कंट्रोल जेड भी यूज कर सकते हो, राइट। कंट्रोल चेंज करोगे तो वो अंडू हो जाएगा, वापस से बैक साइड में आप आ जाओगे। होता है कभी कभार आप गलती कर देते हो, ओके राइट। तो इस गलती को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके and then इसके पीछे वापस जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिस ऑप्शन विल बी चूज, राइट और ना, जस्ट क्लियर, समझ में आया जैसे ना, यस सर। जस्ट ओके। तो आपको करना क्या है,
अभी के टाइम में आपको यही करना है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाया है, जो भी मैंने अभी तक बनाया है, यहाँ आपकी जो भी एग्जांपल्स है वो आपको कंप्लीटली कवर कवर अप करना है, ओके, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से, राइट। ओके, हो जाएगा, ऐसे है ना, ये सारी चीजें फर्स्ट एंड सेकंड पेज। Yes, sir. Okay, so do this thing, and the next class will be on your Monday, right? And then uh, on Monday onwards, I need, कोई भी छुट्टी नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जो मेन जो टूल्स वगैरह स्टार्ट होंगे वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। अब तक चलो आपने स्किप कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, मगर अभी तक नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। इफ यू नो अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू नो अबाउट मेनी ऑफ थिंग्स, ओके, यू कैन कैलकुलेट मेनी ऑफ थिंग्स, ओके। एंड देन ऑन मंडे ऑनवर्ड्स हम यहाँ से टूल्स स्टार्ट कर देंगे अपनी, ओके, ये जो टूल्स के बारे में बनना स्टार्ट कर देंगे, राइट। एंड देन एक एक टूल्स को ब्रीफली समझेंगे एंड देन यूज करना उसका जानेंगे, राइट। ओके, तो देन ऑन मंडे ऑनवर्ड कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, कोशिश करना कि सारी क्लास अटेंड करो आप लोग, ओके, राइट। Yes, sir.